Welcome to my YouTube channel. It's 8y power 0 whole square. First of all, the square applies on 8. Here, please look at the example. This 2 is a power. This 2 is a power and it applies on 8, this power 2, and this 2 applies on y power 0. Basically, it is the whole power. The square is the whole power. It means when this 2 power applies on 8, 8 square means 8 multiply 8, 64, and y, the power and power multiplied 0, and if anything or any number whose power is 0 is equal to 1, then it multiply by 64, or simply we can say that multiply 64 multiply 1 is 64. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास 8 है और y की पावर 0 है और उस होल के ऊपर स्केयर है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो 2 होगा ये हमारे 8 के ऊपर भी स्केयर आएगा और y के जो पावर है 0 उसके ऊपर भी ये स्केयर आएगा, ठीक है। क्योंकि ब्रैकेट में जितने नंबर होते हैं उनके ऊपर स्केयर आता है, यानी कि अगर उसके होल के ऊपर ओवरऑल ब्रैकेट के ऊपर स्केयर हो, पावर हो। अब 8 का स्केयर होता है 64 और ये y का स्केयर होगा किसी भी चीज़ की पावर 0 1 के बराबर होती है। तो 8 का स्केयर 64 आ गया और y किसी भी चीज़ की पावर 0 1 के है, तो वही नंबर जब 1 से मल्टीप्लाई खाएगा तो उसको 64 1 64। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।